Jai Hind sir, Jai Hind. वेलकम एवरीवन टू अनदर लाइव सेशन। आज के गेस्ट काफी काफी स्पेशल हैं। ही इज अ डियर फ्रेंड। आई हैव नोन हिम फॉर द पास्ट मेनी इयर्स एंड आई थिंक अपने एक्सपीरियंस में जो मैं जो कहना चाहूँगा ब्रीफ में इज ही इज रियली वन ऑफ दोज 360 डिग्री individual personalities that you come across. I've seen him take on a role of an instructor, a guide, a mentor, a mountaineer. He has been selflessly been part of a lot of rescue missions locally where he lives, and also in the mountains. He is the founder of the Mussoorie Rescue Warriors. So first of all, thank you very much for introduction. काफी ज़्यादा आपने व्याख्यान कर दिया. I don't think I've been doing that much. I'm just a simple person, just rolling my wheels up and down the mountains. But just wanted to tell people about Mussoorie Rescue Warriors. It's not an organization. I mean, it's not officially registered or anything. But it's a much needed service from my perspective when people go to the mountains. No one thinks about the safety measures. एकदम मतलब I mean, it's a human nature that everyone thinks for the best. But what if something goes wrong? Then Right. What sort of backup plan do we have? So I started this service maybe 20 years ago, like more than 2 decades now, because my father died in a road accident. Not like that he was found dead on the road, but he fell off the mountain. And I looked at people how he got rescued out. I was not even knowing what the term rescue means at that time. So that kind of gave me an idea that I should be doing something like this. So I started doing some research from my end that what can I do, how does a rope work, and how to rappel down and all. So to know all these things, I got in touch with Stephen Alter. He's a famous author who lives in Landor in Mussoorie. So Right. he's also my godfather. So the whole credit kind of goes to him, and also to Hannafel Center Woodstock School, where I was associated with them for more than 15 years. So that's where it came from. And also, as I said, Mussoorie Rescue Warriors is a much needed service because it's human nature. Na? End of the day, when we go into such situations, then only we think about it. So Right. training local youth, creating awareness that yeah, it is needed. But yeah, I don't know how many people will believe in it. That I'm not sure. Okay. So as far as the rescuing people part that happens, ये आपका urban areas में होता है, close to Mussoorie where you live, in the mountains also, wilderness में कितना होता है, and generally आप close to do you also deal with road accidents or anything else? I mean, Indian Mountaineering Foundation has created a group called Risk Management Unit (RMU). So I'm part of that, and I represent Mussoorie. So anything Okay. either that happens on road or in the mountains, if I am free, because it's not a paid service that someone pays me for it. Right. If I'm free and I have a spare time, I'll go and rescue anyone out. But end of the day, 99% in cases are of road accidents, Right. where people sometimes mix maybe drink and drive or whatever reason. So Right. cars fly down the mountain in a simple Right. words. Okay. Okay. So, okay, keeping in mind that abhi, most of our audience is basically people who are looking for outdoor activities. They are climbers, or they are the people who trek, or they are interested in trekking. Mhm. So when you talk about uh, having these rescue missions in the mountains, Mhm. so what kind of trekking related accidents, or mountain related accidents you have been recently a part of, and what do you generally see?
what is what are the issues or what kind of problems happen? I think any trekking agency or any company who take people up the mountain. I mean, from my perspective, I'm not saying that I am the pro or I know everything, but as per my experience, an individual should be aware of best case and worst case scenarios. So if a backup plan is made, and for example, if I am taking clients up the mountain, I'll tell them that okay, this is what the plan is, and we have an emergency response team who will come and respond. I mean, that may cost some money, but I mean, there is some surety that yeah, let's do it this way, and whoever is taking part in such activities uh, are also told that yeah, this is what the plan is. And also people who either track leaders or guides or whatever term we use should be trained, and there are several institutions in India as well as outside India where people can train themselves, and not only training but in awareness, and also recertifying yourself with whatever scope of practice you have. For example, Right, there are courses run by Hannibal Center, which is near me where I live in Mussoorie. They do wilderness right, first responder, first aid, wilderness advanced first aid. So keeping all these trainings handy, also applying them in life, and uh, also recertifying every. I mean, there is a limit. Every 2 years, you have to recertify yourself. right. So that's also mandatory. So training is important, experience is important, and also letting people know that this is what we do. Right. And over to you. Okay. So when it comes to safety, आपने दो aspects बोले. एक आपने बोला कि from the organizer point of view, obviously, when you're choosing your agency or your tech leader, you are sort of ensuring that the person is well trained, certified है, knowledge है in Mhm. terms of rescue to handle any such situation that may come in. People who are uh, going for the trek themselves, individual level पे, जैसे मैं एक ट्रैकर हूँ, Mhm. I'm climbing, going to. What kind of safety measures or knowledge or know-how or awareness should I have as an individual? Because I think safety Mhm. first comes from us. अब Yeah. सबसे पहला हमारे हाथ में है. So Mhm. what all measures do you suggest that we as people who are going to mountains, paying for services and all, also should Mhm. think upon ourselves? Well, most important part will be whenever it comes to safety measure, one has to think loud and dig deep. So when I am, if I am, for example, if I am a client and I am going through such any agency, either India or outside India, I should, Right, when it comes to safety measure, I should be digging deep. That yeah, okay, what is your backup plan and what are the certification, and there is X amount of questions in my head which I will put forward that this is what I need all this information, not from social media. I mean, internet. I mean, you can get information from internet, but not only internet, but talking to people who has been on that trail last. hmm, So it all comes under the expedition planning, and also I will try and follow, practice leave no trace ethics. The first ethic says plan ahead and prepare. So if our planning and preparation is proper, so then chances of survival or anything are less. I mean, I know it's going to be exposed environment. Anything can happen. hmm, It's a human nature, and mountains are big. Na? They are the real mirrors. So they can right, teach us lessons, but end of the day, how are we prepared? So what is our right, preparation, and how have we planned our trip? right, So talk to people, take more and more information, whatever we can, and then only right, one should take a step forward. right. Okay. Okay. Taking an example of an incident. Let's say, अभी
you were part of that rescue when that incident happened. I think last year, start of winters or somewhere around the monsoon season, where it snowed a lot close to Mhm. Gangotri region, and there was a group of hikers that got stuck, and then a few of Right. them also died. And I think you Mhm. were part of that rescue, who part of the team who went. So Mhm. breaking that incident down, what were, let's say, the errors, or what are the learnings from that people can take in? So I have also seen this challenge in life whenever I take people up the mountain or any other agency that लोग कहते हैं कि हमने पैसा दिया है. So if a local Right, expert is saying कि यार आज we can't cross this pass because weather is not looking good, and then it comes to money, लोग कहते हैं कि we have paid a lot to reach here, so we want to do it. And in most cases local people will turn around और फिर वो क्लाइंट्स अपना डिसीजन बनाते हैं कि लेट्स गो, या सम पीपल विल ट्राई टू पे एक्स्ट्रा की लालच देते हैं कि आई विल पे यू एक्स्ट्रा, right, लेट्स डू इट. right, और फिर नेचर इज नॉट इन आवर कंट्रोल ना, वो तो होगा. आई मीन इट्स गोना true, स्नो, रेन, एवलांच आएगा, कुछ भी होगा. right, सो इफ समवन हु इज एक्सपर्ट एंड हैज बीन वर्किंग इन स्पेसिफिक रीजन, तो उनकी सुनना right, भी बहुत जरूरी है लोगों को, whoever is participating, कि mountains are gonna remain there only. It's us, mountains are just telling us कि तेरी औकात नहीं मुझे चढ़ने की, अभी वापस जा, train yourself more and come back. I'm gonna remain here only. As I mentioned earlier, ना, they are the real mirrors. So they're just right, telling us कि मैं इधर ही हूँ, आप जाओ वापस, मे बी इट्स नॉट अ राइट टाइम ऑफ द ईयर या जो भी. और वो right, इट गिव्स अस इनफ हिंट कि अभी नहीं है आपके बस का, आप जाओ right, वापस. And I'm not underestimating anything. People with amputation, amputated leg go climb Mount Everest ना. और mm, ऐसे भी इंसिडेंट हमने देखे हैं कि वो अच्छे खासे हट्टे कट्टे लोग दे वेंट टू माउंट एवरेस्ट mm, और वापस आके दे डिसाइडेड टू टेक अ टूर ऑफ लद्दाख. ले में दे लैंडेड एट 12,000 फीट और एक ही दिन में गए अप टू खारदुंगला पास. right, सीवियर हेडेक, एंडेड अप इन हॉस्पिटल एंड डाइड. तो नन ऑफ द माउंटेन्स आर स्मॉल, वो बहुत बड़े हैं, हमारी सोच से भी true, बहुत बड़े हैं. एंड दे गोना रिमेन देयर ओनली. तो कीपिंग दिस आल्सो इन माइंड कि हम कर क्या रहे हैं. right, right. I think that's a very important takeaway. ठीक है. Coming to the sustainability factor of our conversation, let's say which also बहुत wide topic है sustainability. So Mhm. trekking or mountaineering के as perspective में, if we talk about the environment, or if we talk about, let's say, the capacity of a place or a region, Mhm. एग्जाम्पल लेके बात करेंगे. आप जहाँ रहते हैं मसूरी में, वहाँ से there's a popular trek, एक आपका नाग टिब्बा है, Mhm. where I think hundreds of people go, and then there is Mhm. another Kedar Kantha है, where that's the, I would say, the winter. बस सुना ना लोगों ने नाम और लाइन लगा दी, Mhm. people just go because Mhm. it's cheap and whatever. Yeah. So Yeah. what do you think? ये ठीक है, lot of them may be first time trekkers जो सोचते हैं कि ठीक है हमारे लिए Mhm. आसान है जाना, but Mhm. what kind of impact are they leaving behind? If you can throw some light upon that. So again, I'll try to concrete and focus on leave no trace ethics. So one of the leave no trace ethics is कि travel and camp on durable surfaces. और अभी इट्स इम्पॉसिबल, और ये मेरे ख्याल से वी शुड हाईलाइट और बोल्ड दिस लाइन की इट्स इम्पॉसिबल टू लीव अ इम्पैक्ट इन एनी प्लेस. Right, एवरीवन whoever is going up the mountain या कुछ भी हम लाइफ में करते हैं, we leave a impact. So what kind of some impact. impact are we leaving? But all this can be एक हिसाब से ये कर सकते हैं कि we can minimize our impacts. तो whatever we pack in, we should pack it out. That Right, is one example. कैंप फायर लोग करते हैं, तो अब जितना ज्यादा फुटफॉल होगा उतने ज्यादा कैंप फायर भी होंगे, पीपल विल स्टे. जैसे नाग टिब्बा है या केदारकांठा है, वट एवर नेम्स वी यूज, वी हैव कैंपटी फॉल ऑल्सो इन मसूरी ना.
तो वहाँ पे there's one public toilet and thousands of people visit in one day and people urinate in खुला environment and all that human waste washes down the mountain when it rains and underneath Kempty Falls there's a big village और वहाँ के लोग क्योंकि वो contaminated water है they'll consume it and they end up in hospitals. So just because of those 20-50 odd shops yeah, this is one example. Same thing with any mountain. तो more and more footfall जितना होगा उतना ज़्यादा impact ही पड़ेगा उसका. So people should also be looking at different areas to promote more and more places जिससे एक जगह में impact कम हो. जैसे लोगों का मैं ये कहता हूँ कि इंडिया में देयर इज भेड़ चाल ऑल्सो ना कि एक जिधर को जाएगा वहीं को सब लोगों को जाना है. Sorry to say use this word but that's how it is and we are humans और गलतियां इंसान से ही होती हैं लेकिन हम गलती कर क्या रहे हैं उसका what impact it's gonna put on us. तो केदारनाथ है, जोशीमठ है, उत्तरकाशी अर्थक्वेक है every 10 years. 2003 उत्तरकाशी अर्थक्वेक, 2013 केदारनाथ इंसिडेंट और 2023 अभी जोशीमठ हमारे सामने है. तो नेचर नोज हाउ टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ. We are just tiny dust particles in front of the nature. तो सस्टेनेबल काम करना है तो उसके लिए सस्टेनेबल सोच होनी पड़ेगी पहले. इन्वॉल्व द लोकल पीपल in whatever way, however we can help them with revenue generation. क्योंकि हो क्या रहा है people are migrating from villages. और बाहर से लोग आके पंतवाड़ी में या केदारकांठा में people have made hubs ना. लोकल लोगों को बिजनेस तो दिया है but end of the day मतलब उतना ज्यादा I don't think people are getting. So if I talk about my work, not rescue but I also do trekking. I take people for hiking ना. So I have a team formed in a village. And they've been getting trained with Hannibal Center. अभी 2 लोग आए हैं. There's a track leader course that they're running. So if 2 people will understand कि अच्छा this is also an exposure and some learning in it, and they'll train more people. And whoever is eligible next time will come and do the course. So I'm not saying कि I'm sponsoring them or anything, but I'm just a mentor or a tuner कि ठीक है ये भी important है in life. I know they're the best people, they are the kings of their areas. They know everything better than me or anyone else who comes from outside as a visitor. They know everything. लेकिन एक फाइन ट्यून करके काम करना थोड़ा सा अलग है. Keeping safety and everything in mind, how to handle people. कई सवाल जवाब होंगे. People will have different menus, allergies, ये medical condition. तो ये सब जानना एक फॉर्म क्रिएट किया या कुछ भी इन विच पीपल नो ऑल दिस इंफॉर्मेशन बिफोर हैंड ना. तो उस हिसाब से अगर काम किया जाए तो सेल्फ सस्टेनेबिलिटी भी आएगी और एक सस्टेनेबल काम होगा. दैट इज व्हाट आई थिंक. Okay. So again, from people who are listening, people I mean as individual point of view से जो प्रिपेयर कर रहे हैं अभी सोच रहे हैं कि अब ट्रैक्स पे जाएंगे, let's say snow, whether they are doing the winter treks or अब summers में प्लान कर रहे हैं. When it comes to the environment, और जैसे आपने बताया कि impact होता है, आप जाते हो तो कहीं ना कहीं impact होगा. To what degree is that impact happening is in our hand. That is something that we need to consciously think on. So कुछ do's and don'ts. If you can list out some do's and don'ts, or probably don'ts, क्योंकि I think वो maybe पता नहीं I don't know which कौन सी list बड़ी होगी do's की या don'ts की. But कुछ आपके व्यू में कुछ ऐसा है जो आपको that you tell people who are going to trek on with you. आप जैसे जिन लोगों को ट्रैक कराते हैं आप कुछ do's and don'ts की लिस्ट देते हैं. तो if something you can talk about that. I can only say one thing. और मेरे ख्याल से आपने ये लाइन पहले भी सुनी होगी कि हमको कभी भी वो प्रकृति के साथ वो व्यवहार नहीं करना चाहिए जो हम अपने साथ नहीं चाहते कि हमारे साथ कोई करे. तो मिनिमाइज इम्पैक्ट्स जितना हम उसे कम कर सके. एंड ऑल्सो कीपिंग इन माइंड कि वी आर नॉट द ओनली पीपल इन दैट माउंटेन ना. देयर आर लॉट्स ऑफ अदर लिविंग बीइंग्स. वहाँ पेड़ पौधा पशु पक्षी हर चीज है. एंड इट्स देयर होम.
it's their native place. We are just visitors. तो जैसे if we go to any nature reserve या any forest, I know we take permission from forest department या किसी ना किसी department के अंडर वो आता है, but have we taken permission from those living beings who live in that environment? We haven't. So we should treat मतलब अपने आप को ऐसी स्थिति में रखें या ऐसी कंडीशन में रखें कि वी आर गेस्ट, क्योंकि इफ अ अननेसेसरी पर्सन वॉक्स इनसाइड द हाउस एंड स्टार्ट ब्रेकिंग थिंग्स, ग्लास के विंडो के ग्लास तोड़ रहे हैं, टीवी तोड़ रहे हैं, तो व्हाट विल बी आवर रिस्पॉन्स? हम भी कुछ करेंगे उसके लिए ना कि नहीं भाई ये गलत है, एंड विल ऑल्सो गेट एंग्री, और फिर हो सकता है पुलिस बुलाएं या कुछ करें, बट दे डोंट हैव ऑल दोज राइट्स ना, वो कुछ नहीं कर सकते। कैन अ डियर किक अस आउट फ्रॉम अ फॉरेस्ट? नो। तो हमको वो डियर समझ के अपने आप को रखना है कि वट एवर देयर बिहेवियर इज, वी मतलब वो लीव नो ट्रेस एथिक अगर 7 लोगों की समझ में आ जाए, देयर आर 7 एथिक्स, उसमें सब कुछ है कि रिस्पेक्ट वाइल्ड लाइफ, मिनिमाइज कैंप फायर इम्पैक्ट्स, ये 7 प्रिंसिपल हैं। अगर लोगों के दिमाग में ये बैठ जाए, जो भी ऑडियंस हैं, आइदर ट्रेन, नॉन ट्रेन, बिगिनर्स, तो मेरे हिसाब से उस लीव नो ट्रेस की सीक्वेंस बना लें और प्लान अहेड एंड प्रिपेयर से लेकर और डिस्पोजल ऑफ वेस्ट प्रॉपर्ली, ये 7 हैं एक रो में, तो आई थिंक अच्छा इम्पैक्ट होगा। मतलब देयर बी सम इम्पैक्ट दैट वी विल लीव बिहाइंड, क्योंकि जैसे हम बात करते हैं, आई बीन टू अलास्का एंड अदर प्लेसेस, तो इन वेस्टर्न कंट्रीज देयर आर टेरिटरीज वेयर वन कैन नॉट टेक अ डंप इन विल्डरनेस, तो यू हैव टू कैरी योर पूप आउट। तो वो कंडीशन मुझे लगता नहीं अभी इंडिया में आने में समय लगेगा, क्योंकि अगर हो भी जाए तो वेस्ट मैनेजमेंट तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इट्स अ वेरी बिग सब्जेक्ट। people who are selling veggies and all on streets ना, उनका सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए म्युनिसिपल बोर्ड हो या नगर निगम कोई भी, they'll come and fine, 5,000 का फाइन, 500 का फाइन, बट व्हाट अबाउट द लेज पैकेट्स एंड मैगी पैकेट? तो दिस इज अ बिग सब्जेक्ट, बट एंड ऑफ द डे इवन इफ आई ब्रिंग दैट वेस्ट बैक, व्हाट एम आई गोना डू विद इट? मैं उसको डालूंगा, इट विल गो टू द लैंडफिल, तो एक जगह से उठा के आप दूसरी जगह डालते हैं। For 15 years, I have also worked with waste management in Mussoorie region, और दिमाग में ये था कि let's do a cleanup drive with ropes and harnesses, क्योंकि my main skill is rope and rescue ना, तो we did brought lots of कचरा out from the cliffs where people cannot reach, लेकिन फिर करें क्या उस कचरे का? What are we gonna do with it? तो वो solution आने में तो मुझे लगता है समय लगेगा, क्योंकि वो end of the day it's a rotation, we are the generators and we are the users, and और फिर हमारे ही सर पे है वो कचरा। राइट, ओके। मैंने कई लोगों को देखा है कि यू नो सम पीपल सोचते हैं कि यू नो दे एक्चुअली सजेस्ट दैट दिस मे बी द राइट वे, बट आई डोंट नो, आपको पता होगा कि अगर ट्रैक पे जा रहे हैं, क्लाइंब पे जा रहे हैं और कोई बड़ा बेस कैंप बनता है एंड दे हैव लेट्स से अ गुड अमाउंट ऑफ पीपल who are part of the group, they generate a lot of waste. So sometimes they either bury it under the ground or they burn it. Is any of either of the two do you recommend, or do you recommend either instead of that actually bring it back to where you started? Sir, I already said this point. Whatever we packed in, whatever we have packed in, we have to pack it out. Right. Nothing should be left बिहाइंड। मतलब वो जगह ऐसी लगनी चाहिए आफ्टर आवर यूज कि नो वन हैज बीन देयर। और कई जगह ऐसा है कि पीपल हैव मेड फिक्स कैंप्स, आइदर यू गो टू केदारकांठा और एनी अदर माउंटेन जहां पे फिक्स कैंप है, वो सबसे ज्यादा इम्पेक्टेड हैं। तो केदारकांठा में आई वेंट 20 years ago, और अभी रिसेंटली मैं गया था, तो पता नहीं वो एवरेस्ट की, कभी कभी माउंट एवरेस्ट की लोग पिक्चर्स शेयर करते हैं, फुल ऑफ ह्यूमन डेड बॉडीज एंड कचरा एंड ह्यूमन वेस्ट। तो मुझे कुछ महसूस हुआ कि वैसा ही कुछ माहौल वहां भी क्रिएट हो रहा है। अभी तो उतना नहीं हुआ, बट सून इट विल बिकम द सेम। और मेरे हिसाब से वो लालच है इंसान का कि ठीक है कर लिया, इंस्टाग्राम में पिक्चर पोस्ट कर दी या इंस्टाग्राम से देख के गए थे,
which is not bad. I mean, people should do hiking, mountaineering, backpacking, whatever they want to do. I don't have any objections. लेकिन हम अपना प्रभाव कम डालें, अपना impact, तो then it makes more sense to me. I have also seen people when they carry liquor up the mountain. I don't have any concern with that. But when bottle is full, people take it up the mountain. It is heavy. जब वो खाली हो गई, no one bothers to bring it down क्योंकि weight भी कम हो गया अभी तो I think bringing it back. I'm not saying कि people should consume alcohol when they go to the mountains. One should not. But if someone has a choice, तो फिर मेरे हिसाब से it has to be carried back. क्योंकि नागटिब्बा में भी I've seen on top and near the temple people have been doing those things, and I don't have a name. I'm not putting a question mark on anyone, और एक label भी मैं नहीं लगा रहा हूँ कि you did this or someone did this. First, if I'm pointing finger, it goes to me. What is my contribution in all this? तो मैंने क्या किया? That is more important to me. Okay. ठीक है. Coming to the section where we had to talk about other options that people can look forward to. Let's say if someone is planning a quick getaway to the mountains for, let's say, a hike, day hike करनी है, 2 दिन की hike करनी है. People look towards Nagtibba, or people look towards because वो सुनने में आया है, वो Google पे है, मिल जाता है. It's cheap. People go to Kedarkantha, जैसे आप कह रहे हो. What are some other options in that area where you are in Mussoorie, in that Tehri Garhwal range, that people can explore, or you recommend those routes? So as I'm based in Mussoorie, after my exploration for like 20 years, I have explored more than 100-day hikes in Mussoorie, 100+ day hikes, and I've taken enough people. Not that I do it every day, but I have taken people to all these destinations. And it's not that my focus is only on Nagtibba or in one mountain. Mussoorie में there are 2 popular treks. One is Binog and one is Top Tibba. तो यही focus नहीं है. Also exploring more and more, where people should also see it ना कि Mussoorie, talking about Mussoorie is a hill station established by the British. तो वो शांति व्यवस्था के लिए डिस्कवर की थी जगह. But now if you look at it, it is all full of concrete forest. So, and thanks to the government for making the highways very nice. अच्छे तो बन गए, लेकिन people reach here in 4 hours. और करने क्या आते हैं 99% people, according to my research and whatever I observe, मैगी खाने, क्योंकि सचिन तेंदुलकर had मैगी in 4 दुकान. तो उस वजह से इन ओवर द वीकेंड यहाँ पे 4-4 घंटे का ट्रैफिक जैम लगता है. तो मेरे हिसाब से जब हम लीव नो ट्रेस एथिक की बात कर रहे हैं, इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, तो वी शुड आल्सो बी लुकिंग एट द कार्बन मोनोऑक्साइड. उस गाड़ी ने कितना प्रोड्यूस किया दिल्ली से मसूरी आने में, एंड एंड ऑफ द डे व्हाट डिड वी डू. और वही ना कि व्हाट इज द पर्पस. तो बताने के लिए तो मैं 1000 जगह बताऊं, लेकिन विद किसी का आने का पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ विजिट. वो कहते हैं ना, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डूइंग सो एंड सो थिंग इन लाइफ. तो किसी की बकेट लिस्ट बोलते हैं, बकेट लिस्ट में लिखा है मुझे ये करना है, केम्प्टी फॉल में जाके डुबकी लगानी है. तो अभी यूजिंग 4 दुकान एज एन एग्जाम्पल, तो दिल्ली में मान लो मैं रहता हूँ, मैंने रिसर्च की थोड़ी सी, इंस्टाग्राम में देखा, फेसबुक में देखा, या किसी दोस्त ने बताया कि 4 दुकान जाओ. तो आई ड्रोव टू 4 दुकान. मेरे पड़ोसी जिनको कोई मालूम नहीं 4 दुकान या किसी के, ही डिसाइडेड टू गो टू केम्प्टी फॉल विच इज ऑन दी अदर साइड. तो उससे होता क्या है, एक हिसाब से मतलब गलत ही इम्पैक्ट डाल रहे हैं हम किसी चीज पर, क्योंकि वो भीड़ जिधर जाती है उधर हर कोई जा रहा है ज्यादा. तो जहाँ पे वेरेगो भी एफर्ट ज्यादा लगेगा जिस चीज में, वहाँ ऑडियंस कम होगी मेरे हिसाब से. दैट इज व्हाट आई थिंक. बट जहाँ पे एफर्ट आपको लगता है इट्स रिकमेंडेड एटलीस्ट एज अ हाइकर, आई थिंक जो हाइकिंग ट्रैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है, जो मैगी खाने नहीं आ रहा,
वो हाँ definitely कुछ ना कुछ he is ready to walk and put in some effort. So what all routes do you recommend close to that area that people should do? हाँ, उसमें भी सर मैं ये कहूँगा कि वन शुड डू बिग गुड रिसर्च। गुड रिसर्च का Right, मतलब ये कि जैसे नागटिब्बा भी लोग कर रहे हैं फ्रॉम पंतवाड़ी, तो right, उसके लिए भी मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, लेकिन वो भी वही केम्प्टी फॉल जैसा क्राउड है, right, मतलब उतने ही लोग जा रहे हैं, पीपल विद ब्लूटूथ स्पीकर्स एंड सो व्हाट आर द इम्पैक्ट दैट वी आर पुटिंग ऑन इट, उस जगह में उस वातावरण को हम क्यों खराब कर रहे हैं पहले तो। दूसरा, रिसर्च करो एंड ऑलवेज आस्क फॉर अ बैकअप प्लान कि भाई तुम्हारा बेस्ट केस सिनेरियो तो ये है कि ये ट्रैक होगा, विल टेक पिक्चर्स, कैंप ऐसा होगा, ये होगा, जो भी इंटरनेट पे डाला है उसके अकॉर्डिंग लोग चीजें बुक करते हैं, बट वन हैज टू डिग डीप। मैंने पहले भी ये बात कही और मैं हर किसी को यही कहूंगा कि डू मोर एंड मोर रिसर्च, और बैकअप प्लान जरूर जानो कि भाई इफ आई एम अ ट्रैक लीडर, आई हैव टेकन पीपल अप द माउंटेन एंड ऑल ऑफ अ सडन आई स्प्रेन माय एंकल, और फिर 20 लोगों की मेरी जिम्मेदारी है, तो हाउ right, विल दोज 20 पीपल कंप्लीट दिस होल लूप वट एवर वी रूट वी हैव टेकन। तो right. नागटिब्बा जैसे आई ऑल्सो डू नागटिब्बा, दैट इज वन ऑफ आवर पॉपुलर ट्रैक्स, बट आई हैव नेवर बीन, आई हैव ओनली बीन वंस फ्रॉम दैट पंतवाड़ी एरिया। आई मीन इट्स अ ब्यूटीफुल वैली, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द क्राउड, और फिर वो फुटफॉल जैसा जितना ज्यादा होगा तो उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आप कौन सा somehow रूट we लेते हैं? have start pardon। आप कौन सा रूट लेते हैं नागटिब्बा के लिए? तो हम जाते हैं, सो वी हैव टू डिफरेंट रूट्स, वन फ्रॉम देवलसारी, तो देवलसारी से, देवलसारी इज अबाउट आवर एंड हाफ 2 hours फ्रॉम मसूरी। वहां से Okay, वी गो टू द गेस्ट हाउस, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, वहां पे स्पेंड अ नाइट, go up to Lunsu. Lunsu is a mountain. I don't think people have heard about it. कम लोगों को मालूम है। Lumsu right. actually, it's a Tibetan name. If you read about 7 years in Tibet, na? So then the Yeah, person the who was movie. in jail, Yes, in Dehradun jail, yes. na, when he escaped from Dehradun jail, he somehow ended up taking that route, और वहीं से then he went down to Chinali Sword and then to Uttarkashi, and from Nelong Valley he went to Tibet, जो अपना सिल्क रूट है पुराना। तो इस Okay, वजह से आई डोंट नो, आई मीन देयर इज सम हिस्ट्री टू इट, थोड़ा मैंने पढ़ा है उसके बारे में, बट या, सो लुनसू नेम केम फ्रॉम देयर। सो कनेक्टिंग लुनसू एंड नागटिब्बा फ्रॉम द अदर साइड का मतलब अगर पंतवाड़ी नॉर्थ साइड है तो वी आर डूइंग इट फ्रॉम द साउथ साइड। तो एक okay, एक लंबा रिज है, इट्स लाइक अ हॉर्स शू। okay, ये दो पीक आपस में कनेक्ट होती है, नो इंटरेक्शन विद नागटिब्बा का पॉपुलर ट्रेल, वी आर ऑन अ वेरी डिफरेंट ट्रेल, एंड one can either start from Srikot village. Srikot village is 2.5 hours from Mussoorie driving, and then a 6 kilometer of hiking up to base of Naktibba, and then summiting the mountain from the other side, and then taking the ridge to the other side. तो ये दोनों आपस में कनेक्ट भी हो सकते हैं, and not only these, but there are as per Stephen Alter's explorers map and his book, we have 7 summits in this region in the lower Himalayas. So I'll start with the names. So one is Binog, first one. So if one is doing all these 7 summits, Binog is the first one. Second is Surkunda Devi. So there are two Surkunda Devis in this region. One is on the Dhanolti road and another one is on Naktibba Ridge. So okay, Surkunda Devi, third will be Naktibba, fourth will be Lunsu, fifth will be the main Surkunda Devi which is on Teri road, sixth will be Top Tibba, and seventh will be Pepperpot. तो ये पूरा okay. it's a circle. So starting from Mussoorie, ending your trip in Mussoorie, a week long expedition journey for someone who is fit Fantastic, mentally and physically. fantastic. Okay, so I think ये तो this is a very good option. अब a lot of people also want to know कि और कोई districts हैं उत्तराखंड में जहाँ पे there are other treks which are not again the Instagram वाले जो category है, not that, but other valleys and ridges and areas around Uttarkashi, other districts that you know of that you would want to recommend to people that they should explore. Uh,
So, Woodstock School recently, not recently, but last year in October, they ran a program called, they run it every year, but this year the theme was to do everything in Uttarakhand. Earlier people used to go to Kaza and Manali and other places. So Uttarakhand की theme थी तो उसमें we chose a place called Mukta Top or Mudgal Top. Okay. तो इंडिया हाइक ने भी मेरे ख्याल से ट्राई तो किया. आई डोंट नो दे हैव वर्कड इन दैट एरिया और नॉट, बट आई फाउंड दैट वैली वेरी ब्यूटीफुल. और उसकी थोड़ा सा हिस्ट्री है कि पीपल फ्रॉम अगोड़ा विलेज, बंकोली एंड इन दैट रीजन ना, इट कम्स अंडर उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट. तो अकॉर्डिंग टू द मेथ और थ्योरी जो भी है उनके दिमाग में, देयर इज वन स्मॉल लेक वेयर दे टेक देयर devis and devtas to dip them in that water when it doesn't rain in mountains, जब बिल्कुल बहुत ज्यादा पानी का संकट होता है. and I think same myth was in Naktibba also. तो वो मंदिर जाने का ये कारण था फॉर द लोकल विलेजर्स की व्हेन इट स्टॉप्स रेनिंग, सीजनल रेन नहीं हो रही है, बिकॉज ऑल आवर क्रॉप्स रेन डिपेंडेंट हैं. वी डोंट हैव बिग रिवर्स in these regions. I mean, in Uttarkasi region है भागीरथी and all, but not higher up in those villages. तो मेरे हिसाब से that is one of the places to be explored by an individual जो भी interested हों. Same thing with Naktibba. I mean, people have been doing it from Pantwadi. और अगर हम costing की बात करते हैं तो इंटरनेट पे देखो तो I mean, I laugh at this क्योंकि हजार रुपए में भी नाकटिब्बा कर रहे हैं लोग. और मेरे लिए ये समझना मुश्किल है कि आई मीन हाउ इज इट पॉसिबल एंड व्हाट सर्विसेज यू गेट इन 1000 रुपीज. आई एम नॉट अंडर एस्टिमेटिंग द कॉस्ट की 1000 रुपया कुछ नहीं होता. आई मीन इट्स एंड ऑफ द डे इट इज मनी. और पैसे की बात तब आती है व्हेन इट कम्स टू सर्विसेज. तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेकिंग समवन टू नाकटिब्बा, आई डोंट थिंक इट विल बी एप्लीकेबल, या मैं क्या कर पाऊंगा उससे. मतलब आई वोंट बी एबल टू इवन हायर अ पोर्टर फॉर कपल ऑफ डेज. तो ठीक है, आई मीन पीपल डू इट. अभी आपने जैसे बोला था कि देयर विल बी नो बैकअप, नो प्रिपरेशन, नो सेफ्टी, a lot of other things that go into putting together the trek. Yeah. हाँ, इट इज लाइक गोइंग अप टू रोहतांग पास और आपको वो स्नो सूट देते हैं ना एक, कि वो रेंट पे लिया 200-300 में, जो भी एक पिक्चर खिंचाई एंड यू कमिंग बैक. अभी किसी का पैर वहां मुड़ जाए तो ठीक है, गाड़ी एक्सेसिबिलिटी है, वन कैन गो टू द हॉस्पिटल, बट नाकटिब्बा में देयर इज नो इजी एक्सेस आउट ना. अगर मेजर इंजरी है तो वन हैज टू बी कैरीड आउट. तो अब जैसे मैं रेस्क्यू में घुसूंगा तो you'll not believe this, I don't know you know this or not, but every mile, एक माइल में you need 16 people if one has to be carried out on a litter. तो आप 16 लोगों की कॉस्ट लगाओ, either local villagers या a team from outside. तो keeping all this accountability in mind, क्योंकि end of the day मैं कितना भी रेस्क्यू करूं, मसूरी रेस्क्यू वॉरियर चलाऊं या कुछ भी करूं, फॉर फंक्शनिंग फंड्स आर रिक्वायर्ड. एंड आई हैव सीन दिस, ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि स्पेशली इन रोड एक्सीडेंट. आई एम सॉरी, आई एम गोइंग ऑफ द टॉपिक. मैं थोड़ा सा मसूरी रेस्क्यू वॉरियर में चला गया, बट आई वांट टू स्पीक अबाउट इट. So when there is a road accident around Mussoorie, मतलब a car has gone down the mountain, I'll go with my rescue gear, I'll rig up the gear, system बांधूंगा, सब कुछ करूंगा, I'll rappel down, I'll look at the person, अपना patient assessment system करा. By the time I come back, this person is rescued out either dead or alive. 5 or 10% of the gear is already disappeared. I've seen people using carabiners, making key chains out of those. तो अभी मालूम नहीं है तो कुछ भी करेगा इंसान ना, but to buy one carabiner, it will cost something ना. So keeping all that in mind, that's why हमारे जो prices हैं
in comparison with whatever people are charging up from. I'm using Pantwadi Naktibba as an example. वो थोड़ा सा ज़्यादा है. ज़्यादा क्यों है उसके पीछे रीजन आई हैव टोल्ड यू. मतलब दैट इज व्हाट आई थिंक. ठीक है, I think that was a great takeaway in terms of knowledge. I think what people should consciously think of when they're going for a trek, उनको कैसे व्यवहार करना चाहिए, जैसे आपने बोला, with nature, with the environment, thinking firstly for themselves, for the nature, for people around, and I think also from the safety point of view, किस तरीके से उनको तैयार होके जाना चाहिए. So I think great takeaways from that. So thank you for sharing these. Thank you very much for joining. I think we've covered quite a lot. Yeah. And one more point that I would like to share. So whenever an individual is booking a trip with someone, if they are asking for information, so this is very common in especially in India. People hide past and pertinent medical history. Please share it. Just because of that, if I know the information, अभी अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि पर्सन हु हैज एपिलेप्सी की कोई बीमारी है एंड दे गेट उनको दौरा पड़ता है, मान लो मिर्गी का, और 20 लोगों ने साइन अप किया है फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड वन पर्सन हैड दैट चैलेंज, तो मेरे लिए वो समझना आसान होगा टू डू द पेशेंट असेसमेंट सिस्टम कि हाँ this person has this problem, this is the history, and I should be I'm not a doctor, but whatever comes under my scope of practice, I will be taking care of that, and based on the decision ki this person has to be evacuated out or can stay in field. So keeping that in mind, so I will request the audience that personal medical information has to be shared with the trek leader or with the organization. And also people come with lots of painkillers and other items that those are not necessary in outdoors. So if I'm having a headache, that can be because of X amount of reasons. It can be dehydration or nausea, altitude challenge or anything else. So please please tell the trek leader that this is what I'm facing challenge with. I'm having headache and without taking a pill. So if one has already taken a pill, then it is impossible for us to assess what is wrong with this individual. So I don't think it's a good idea to take any unprescribed medication by the doctor. So I always tell people personal medication prescribed by the doctor are only required to be carried along. अगर डॉक्टर ने दिया है तो अपनी मर्जी से अगर पैरासीटामोल या any other medication someone is taking is a red flag for me. I will doubt. I think thank you. That's also a very important point. Being honest with yourself. I think first again I think self पहले आता है, and then also with the team that you are going to. So I think that area of trust needs to be sort of established. So I think that's also required. Yes. Okay. Thank you very much. I think we should now close it. And thank you for joining, Titu sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Okay. Jai Hind.